Good morning, students. Today we will start a new chapter. Chapter number 2, Roman numbers. The Romans used alphabets to write numbers, and do you know they did not have any symbol corresponding to 0. Their counting started from 1 onwards. Children, you have seen Roman numbers in your day-to-day life. Do you remember the board outside of your class? Now you are in class 4 and the board outside your class is IV. IV is 4 in Roman numbers. Let us begin the topic. The Roman numbers, we have the 7 basic alphabets which are I, V, X, L, C, D and M. From these 7 we will build up other numbers. Here you can see in the table also, I stand for 1, V stand for 5, X stand for 10, L stand for 50, C stand for 100, D stand for 500 and last M stand for 1000. These are few rules which we have to keep in our mind while forming the numbers. Children, there are 4 rules, but in today's class we will learn only 2 rules and rest we will cover in our next class. Rule number 1, subpart A. The numbers I, X and C can be repeated up to 3 times on succession to form numbers. When a Roman number is repeated, the number represented by them is their sum, which means जो नंबर इसमें I, X और C है वो केवल कितने बार रिपीट होगा 3 टाइम्स और अगर वो रिपीट हो रहे हैं नंबर तो वो एक दूसरे से क्या होंगे ऐड होंगे दिस मीन्स सम होंगे. लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स. फर्स्टली I स्टैंड फॉर 1. अगर I 1 है और अगर नेक्स्ट में I दिस मीन्स 2 बार अगर I है दिस मीन्स 1 + 1 इक्वल्स टू 2 एंड इन थर्ड I + I देन अगेन I 3I है तो दिस मीन्स 1 + 1 + 1 इक्वल्स टू 3. Let us take one more example. X. Suppose X is equals to 10. So if 2X is there, 10 + 10 that is 20. And in third, X, 3 times X that means 10 + 10 + 10 equals to 30. Similarly, C. Suppose C is equals to 100. So C, 2 times C that means 100 + 100 that is 200. C, 3 times C that means 100 + 100 + 100 that is equals to 300. जैसे कि आपने इस रूल में पढ़ा बच्चों I, X और C केवल कितने बार रिपीट होंगे 3 बार रिपीट होंगे और अगर एक के बाद दूसरा आ रहा है 2 बार अगर वही लेटर आ रहे हैं दिस मीन्स वो दोनों आपस में क्या होंगे ऐड होंगे और वही नंबर 3 बार आ रहा है दैट मीन्स वो आपस में तीनों के तीनों क्या होंगे ऐड होंगे लेकिन 3 से ज्यादा ये नहीं होंगे सिर्फ ये 3 ही बार रिपीट करेंगे. अंडरस्टैंड. नाउ कम टू द सेकंड पार्ट. द डिजिट्स V, L and D are never repeated as its repetition is invalid. जैसे कि आपने लास्ट में पढ़ा था I, X और C ये तीनों रिपीट होंगे लेकिन कितने बार रिपीट होंगे ओनली 3 टाइम्स. बट नाउ इन दिस यू हैव टू लर्न V, L and D are never repeated. इसका मतलब ये कभी रिपीट नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 बार V लेते हैं V इक्वल्स टू और V स्टैंड फॉर 5. अगर हम 2 बार V लेते हैं दैट मीन्स 5 + 5 इक्वल्स टू 10. तो क्या हम ऐसे 10 लिख सकते हैं तो इसका आंसर है नहीं हम ऐसे 10 नहीं लिख सकते. इज नॉट डन. इंस्टेड वी राइट हमें 10 लिखने के लिए हमें किसका कौन से अल्फाबेट का यूज करना पड़ेगा X जो कि आपने फर्स्ट टेबल जो आपको दिखाया था उसमें आपने पढ़ा था. तो V, L और D कभी भी अगर आए तो ये कभी भी रिपीट नहीं होंगे. कीप इट इन योर माइंड. नाउ कम टू वन मोर थिंग. नो रोमन न्यूमरल इज रिपीटेड कंसेक्यूटिवली मोर 3 टाइम्स. ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि 3 बार से ज्यादा कोई भी रोमन जो अल्फाबेट्स है वो रिपीट
नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे x x x x 4 बार अगर हम x लेते हैं, दैट डजेंट मीन कि ये 40 हो जाएगा, ये नहीं होगा। 40 के लिए दूसरा रूल है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड? नाउ कम टू दी रूल सेकेंड A. When a Roman symbol of lower value is written to the right or after the symbol of a higher value, the values of a symbol are added. Means अगर रोमन सिंबल में कोई लोअर वैल्यू है, मींस छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू के राइट साइड में लिखी है या उसके बड़े वैल्यू के बाद में लिखी है, उसका ये मतलब है कि वो बड़े वाले वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एग्जाम्पल, सपोज V and I is here. V stand for 5 and I stand for 1. इसमें आप देख रहे हो कि V के राइट साइड में I लिखा है और V की वैल्यू I से बड़ी होती है, तो इसका मतलब वो बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो 5 + 1 = 6. Now in second, V, then I, then I. V stand for 5, I stand for 1, again I stand for 1 = 7. Next, X. X बड़ा है and I छोटा है. X stand for 10 as you already know. Then I stand for 1, that is equals to 11. Now next, X stand for 10, I stand for 1, again I stand for 1. So add up all this, what we get? 12. Now in rule B, value of the similar Roman symbols are also added as shown in rule 1. Means अगर सेम नंबर के रोमन सिंबल्स हैं तो वो आपस में क्या होंगे, वो भी ऐड होंगे। एग्जाम्पल, x x x, एक ही वैल्यू है, x ही है, वो रिपीट हो रहे हैं, 3 टाइम रिपीट होंगे, तो उन तीनों को भी आपस में हमें क्या करना है, ऐड करना है। सो 10 + 10 + 10 = 30. Okay children, in today's class we will cover only these 2 rules. You have to write in your notebook these rules and also make the table which we are already learned, which I shown to the next previous slide. वो पहली स्लाइड में जो मैंने आपको टेबल बनाया था वो आप लिख लीजिएगा कॉपी में, और ये दोनों रूल्स अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट वी विल कवर इन दी नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।